It's live now. Okay, so we are starting now. So, namaskar and welcome to all of the viewers who has just joined us for this very interesting session, which we are going to happen on this chronic disease management. I am Deepak Sharma. I am working as a Deputy General Manager, Maharishi Ayurveda, and on behalf of Maharishi Ayurveda, once again I welcome all of you. Before I involve our speaker of today, Dr. Rajesh Sharma, I just would like to give some information about our organization, and then we will request Dr. Rajesh to share his experiences on this chronic management of the disease. So, Maharishi Ayurveda is actually for almost 40 years old organization now, and in these 40 years, actually we have done extensively great work in terms of offering the quality medicines to the patients, not only the India but the worldwide. In fact, we are available in more than 40 plus countries now. In fact, in Europe market, we are the first organization who started the export of the Ayurveda medicines. In fact, you will see that in last 40 years we have done extensively great work in the research and the trial part on our product. We have done almost 79 plus clinical researches on only one single product, that is Amrit Kalash, and put together we have 800 plus clinical research including transcendental meditation and our products. So I mean, we always believe in giving the quality medicines to our patients and the entire world. By saying so, I think this is the time when we start our discussion, which is the topic of today, which is the management of the chronic diseases through Maharishi Amrit Kalash product. So, for discussing that, I request Dr. Rajesh Sharma to, come and share his own experience. If I talk about Dr. Rajesh Sharma is an BMS MD, and he is practicing in our Ayurveda clinic based at Gurgaon. He has done extensively great work in chronic disease management, and he is very experienced consultant in that particular area. He has also given a talk in various different topics on just like the today he's going to talk on that. So now I request Dr. Rajesh Sharma to share his experiences on Amrit Kalash and how he handles these chronic diseases through Amrit Kalash. So doctor, please share your experiences. Thank you, Deepak ji. So nice of you for the introduction and conducting and moderating this session. And I also welcome all the fellow Vaidyas today who are watching our session live. Thank you so much for joining and taking time for this. So, Amrit Kalash. Let me just first introduce, for example, the how it is available in which forms and all. So Amrit Kalash is kind of a pack available in a Chavanprash kind of a substance, a lay kind of a substance, along with the tablets. So this is the sugar based version of this. Both of them can be uh, purchased together or even separately. One is called Maharishi Amrit Kalash paste, and one is called a Maharishi Amrit Kalash tablet. MAC 4 and 5, this is how we refer them to as. And second pack is Maharishi Amrit Kalash sugar free, the MAK 4 paste. Uh, uh, we have converted the paste into tablet and the sugar. And MAK 5 tablet, which remains the same in both the cases. So, for example, this is the introduction. Now, Amrit Kalash is basically, belonging to a class of rasayanas. And rasayanas, as we all know, I'll quote from Charak Samhita, is that it is helpful in maintaining general health, promoting longevity, increasing memory, mental faculties, and provide preventive measures for maintaining health as well as strengthening the resistance against diseases. So this is how we have drawn our inspiration of Amrit Kalash from. Amrit Kalash is very, very effective in prevention of oxidative damages, which I will, share with you later how this has, helped us in many, many different cases.
So, for example, Amrit Kalash is a full spectrum of antioxidants containing a lot of tannic acids, flavonoids, riboflavin, carotenoids, like that. So, many studies show that Amrit Kalash is 1,000 times more effective in free radical scavenging activities than vitamin C or E. क्योंकि usually doctors आपको vitamin C or E prescribe करेंगे. But in general, if you see, with the studies, Amrit Kalash is much more effective. It is very effective inside and outside the cell also, because vitamin C और E सिर्फ या तो सेल के बाहर काम करेंगे या सेल के अंदर काम करेंगे. तो अमृत कलश को स्टडीज में देखा गया है कि दोनों साइड में हेल्प करते हैं. और ये these are able to actually neutralize most kind of free radicals. Now, unlikely in the case of vitamin C and E, which only attacks a specific type. So Amrit Kalash provides like more full spectrum, yeah, spectrum antioxidant thing. So then, for example, after 40 years of age, an abrupt decline होता है एसओडी एंजाइम के प्रोडक्शन में. अब जो एसओडी एंजाइम है वो हमें फ्री रेडिकल्स को लड़ने की ताकत देता है, क्षमता देता है. इसीलिए जब 40 साल के बाद एजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी देखने लगता है, सो अगर अमृत कलश हम रेगुलरली खाते हैं तो इससे देखा गया है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो 200% हाई हो जाती है. सो इसी को ही जैसे अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, फॉर एग्जांपल जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है हमारे आर्टरीज को, और स्पेशली लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. तो ऐसा वो क्या करते हैं कि पर ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है, वो हमारे आर्टरीज और हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. तो अमृत कलश खाने से ऐसा देखा गया है कि वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हार्ट और आर्टरीज में डैमेज होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है. दूसरे फिर ये स्टडी तो देखा ही गया है कि हार्ट पेशेंट्स में जिनमें एंजाइना होता है उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन उसको कम करेगा अगर अमृत कलश रेगुलरली हम खाते हैं. दूसरे, it improves the treadmill test performance and better functioning of heart muscles. So इस तरीके से देखा गया. इसी में हमारे बहुत नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो ये कहते हैं कि there is no better agent to protect a person's heart and arteries from the ravages of free radical attack. So ये जरूर है. नाउ कमिंग बैक टू फॉर एग्जांपल, अभी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे कि अमृत कलश आप प्रैक्टिस में यूज करते हैं तो आप क्या देखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ इन मोर देन 15 years of my experience I have seen that पेशेंट जो हैं वो कंसिस्टेंटली उन्होंने दिखाया है कि उनकी वेलबींग और वाइटलिटी बहुत इंप्रूव होती है अमृत कलश जब भी वो रेगुलर खाते हैं. सेकेंडली, फॉर एग्जांपल, ये प्रैक्टिस में हमने भी देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हार्ट की हम बात कर रहे थे कि हार्ट के पेशेंट्स को जब हम देते हैं तो उनको एक तरीके का जो पैल्पिटेशन है या जो लैक ऑफ स्ट्रेंथ फील होता है वो कम होता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन द प्रैक्टिस. दूसरे, फिर जो पेन बार बार होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पेशेंट, तो उनको जो है ही हैज गॉन फॉर बाईपास ट्वाइस, but then he was not getting rid of the angina. There would be mild angina kind of things always cropping up, especially in the winters and whenever he exercised. And he used to exercise a lot, so we recommended that he takes Maharishi Amrit Kalash, and after that he has not experienced angina after that, and it's been around 5 to 7 years post that. So this is how Amrit Kalash we have seen in the practice how it has helped people. And yeah, देन दीपक जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बीच में? Yeah, sir. Actually, I can see, I mean, so people are asking the questions also in between the हाँ. session. I think you have made all the points very clear. But still, I think the point which you have mentioned that Maharishi Amrit Kalash can be used in the cardiac patient and offering the very good results in that. Yes. But Yes. one common question is coming is that in cardiac patient, I mean, this ghee is avoided.
and our paste Yes. is made up in the ghee. Yeah. So can we give it? Yes, absolutely. Like, कोलेस्ट्रॉल जो है वो घी से एसोसिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि वो घी जो है वो बफलो मिल्क से है या काऊ मिल्क से है। Correct. सी, अब ये रिसर्च में देखा गया है कि यदि काऊ मिल्क का घी हम यूज करते हैं, दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स द लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि जिसको हम देखते हैं कि तो फायदा उससे होता ही है। Right. सेकेंडली, इट इज यूज्ड इन अ मेडिकेटेड फॉर्म। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने घी यूज कर लिया कि उसके वजह से बहुत संतर्पण जन्य ये सब प्रॉब्लम्स होगी, धमनी प्रतिचय जैसा, तो ये सब नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियसली इट इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ हर्ब्स। तो उसमें होता क्या है कि घी एक्चुअली सर्व करता है वो मीडियम फॉर द हर्ब्स, कि उनको जाना है सेल के डीप तक। तो वो कैसे जाएगा? क्योंकि उसका Hmm. मीडियम ही लाइपोफिलिक है, यानी कि स्नेह का मीडियम चाहिए उन हर्ब्स को। और यदि स्नेह ही नहीं डालेंगे तो फिर वो आगे तक, उसको जहां डीप तक फिजियोलॉजी में वात पित्त कफ को ठीक करना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सो ये मेडिकेटेड घी भी बहुत जरूरी है, और दूसरे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। तीसरे, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड पेरोक्सीडेशन नाम के एक बैड केमिकल प्रोसेस को करता है, जिससे कि डैमेज होता है कोलेस्ट्रॉल से। पर जब वो ही नहीं होने दे रहा वो अमृत कलश, तो फिर Correct. उससे कोई दिक्कत नहीं है। So thank you, sir. I think you have clarified this doubt. So in a moderate quantity and a right source of ghee is always good for the body because it increase the HDL level and reduce the LDL level. So I Yes. think thank you very much for clarifying this doubt. One more question comes is that can we give it to the diabetic patients because again the paste is having this sugar element. Yeah, so a very good question there actually. डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं क्रॉनिकली डिस्कवर होने से पहले भी उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और जब डायबिटीज भी होती है तो बहुत लंबे समय पर यूजुअली प्रैक्टिस में हम आते हैं जब देखते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत चैलेंज हो जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स उस तरीके से नहीं है, क्योंकि डाइजेशन भी ठीक नहीं है, ऊपर से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑर्गन का वेयर एंड टेयर भी बहुत ज्यादा है। तो अमृत कलश जो है वो एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को जो बढ़ा करके ऑर्गन प्रोटेक्शन को करता है, वो बहुत फायदा होता है। पर इसमें हम चूज ये करते हैं कि ग्लूकोमैप, जो हमारा एक और प्रोडक्ट है, वेरी Yes. वेल नोन फॉर रिड्यूसिंग HbA1c, तो उसके साथ में जब हम अमृत कलश देते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ऑब्वियसली शुगर फ्री वर्जन, तो उससे उसका बहुत बहुत पेशेंट को जो है फायदा होता है। क्योंकि इसी एक्सेस शुगर है वो हमेशा डैमेज करेगी आपके नर्व्स को, आपके ऑर्गन्स को, तो वो सब चीजें उसमें रहती हैं। अमृत कलश वो ऑर्गन्स को बचाने में हेल्प करता है। सो Correct. Thank you. आई Thank होप। you, sir. I think one more last question. How long we should give it and at what dose? हाँ, सो अमृत कलश जो है आप शुरू करिए, और एटलीस्ट एट अ स्ट्रेच 3 मंथ्स तक आप लें। उसके बाद गैप दे करके दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो ये तो ये है कि 1 से 3 महीने तो हम रेगुलर इसको कंजम्पशन के लिए बोलते ही हैं। दूसरे जो डोज है उसका, यदि आप पेस्ट वर्जन में ले रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट ले लें। पर उसके आधे घंटे के बाद मैक 5 का टैबलेट लेना है, ताकि उनका जो इफेक्ट है वो दोनों पोटेंशिएट हो जाए, है ना। और दूसरे जो है शुगर फ्री में 1000 mg का टैबलेट रहेगा, वो वैसे ही करना है, सुबह खाली पेट लेना है, और हल्के गर्म दूध के साथ या हल्के गर्म पानी के साथ। फिर आधे घंटे के बाद आप अमृत कलश 5 टैबलेट ले लीजिए, और वैसा ही शाम को रिपीट कर लीजिए, कीपिंग अ गैप ऑफ 10 to 12 आवर्स, ताकि वो एक प्रोसेस में रहे, जो मेडिसिन है या जो हर्ब्स हैं, कि 10-12 घंटे उनको प्रोसेस होने में लगे, अब नेक्स्ट जब हम सोने जा रहे हैं या उससे पहले वो काम फिर से शुरू हो जाए, ताकि ये एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहे। आई होप दिस आंसर्स। Sure, sir. Sure. So, okay. So again, the same question is repeating. How long we prescribe for the patient? I think you already answered Yeah. for that. Fine. I mean, I see patients in Europe and India. They have been taking it for the last 30 years
plus. So there are no untoward incidents of taking this. Rather, like wonderful results people have seen with this. But Any age group barrier? sorry, Can we give it to the kids and something like that? can we give it to the cats? Kids, at Kids, what age we group we can can give start? it to kids, 4 year plus kids we can give. But obviously the dose has to be very mild in those Right. kids. 4 years plus you can give, no problem. Sure. So thank you, sir. I think you have answered all the questions beautifully and explained the benefit of Amrit Kalash. I think one more question is coming. Can we know which is the personal practitioner? Okay, for Yeah. skin practitioner, which one you Yeah, that's recommend? a very BP good or sugar free? question. That's a very good question. So, Dr. सूरज काम्बले जी, आप शुगर फ्री वर्जन आप स्किन के लिए करें, वो ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक. Great. It has shown some very good result in psoriasis. So I believe the next question is कि अनुपान क्या Anupam. है इसका. सो अनुपान जो है वो या तो हल्का गर्म गाय का दूध ले लेंगे, या फिर हल्का गर्म पानी जिनको सूट नहीं करता है, दूध. दूसरे जो टैबलेट है उसको जूस के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं. आई होप दिस आंसर्स आल्सो. Okay, thank you, Dr. Rajat. I think questions are over now, and we want to keep it very crisp and the best information that you have given in a very short time. So once again, thank you very much, and thank you all the viewers. In our next session, definitely we'll meet again with some another interesting topic, and I think again the Dr. Rajat or maybe some other good speaker will join us again. Thank you once again. Sir, here is another question. Yeah. Just Okay. wait. Yeah, this. Okay. Somebody is asking what are the other indication apart from the cardiac? Okay. Yeah, see, it's not just one, like the indication, it's just one of the research was done in cardiac, but you can always give it in low immunity. Wonderful results we have seen. For example, patients आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड फटीग या पोस्ट कोविड, ऐसा कह रहे हैं कि हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं फ्रीक्वेंटली. तो उन सभी पेशेंट्स में ये हमने देखा कि अमृत कलश जब हमने स्टार्ट किया तो उससे विद इन 3 weeks to 1 month रिजल्ट्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है. सो दिस इज वन थिंग. सेकेंडली, अभी रिसेंटली वी हैव गिवन दिस प्रोडक्ट इन टोसिस पेशेंट जिनके आईलिड्स जो है गिर जाता है. वो आईलिड गिरना, उसका बहुत ट्रीटमेंट्स ऑब्वियसली हमने किए, नवारा किरी और नस्से एंड ऑल दैट, बट साथ में ये अमृत कलश भी हमने ऐड किया. वंस द 50% इम्प्रूवमेंट वाज सीन इन ड्रूपिंग आईलिड प्रॉब्लम विच इज टोसिस, तो वो 50% अमृत कलश के द्वारा भी वो अपने आप ठीक हो गया. सो दिस इज द वाइड रेंज, लाइक वी सेड, आप उसको यूज कर सकते हैं. ऐसी एक और क्वेश्चन है कि इम्यूनो Yes. कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर इसको, स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट हैं, जैसे पोस्ट कीमो आल्सो उनको काफी दिक्कत होती है, ऑटो इम्यून, ये सारे प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली अमृत कलश का बहुत अच्छा रोल हमने देखा है. लाइक वी सेड, बहुत वेरिड प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया है, तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. द रोल इन कैंसर पेशेंट्स एक्चुअली दो तरीके से होता है इसमें. एक तो ये है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में स्पेशली हमने देखा कि जब कीमोथेरेपी हो रही थी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. वो टॉक्सिक इफेक्ट कम करने के लिए ड्यूरिंग कीमोथेरेपी ऑल्सो आप इसको दे सकते हैं, पहली बात. और पोस्ट कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद भी, टू प्रिवेंट the cells, वात जो है बेसिकली अनइंटेलिजेंट डिवीजन ना हो सेल्स का, तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं. तो दोनों तरीके से, एक तो यह है कि कीमोथेरेपी के रिजल्ट्स के लिए कि भाई उसका साइड इफेक्ट नहीं हो, उसके लिए अमृत कलश दे सकते हैं. और दूसरा, वंस द कीमोथेरेपी इज डन, जस्ट फॉर द पेशेंट्स मेंटेनेंस, फॉर अ गुड हेल्थ, you can definitely give it cancer patients.
Yeah. So So in one diabetic question: patients, diabetic patient, can we give regular pack to diabetic patient? हाँ, इसमें ये है कि प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उसमें आप रेगुलर पैक दे दीजिए, और जो डायबिटीज वाले हैं उनको शुगर फ्री जो वर्जन है वही देना है। और शुगर वर्जन जो है, एक टैबलेट जो है मैक 4 का जो बना हुआ है वो देना है, फिर आधे घंटे बाद मैक 5 का टैबलेट। वैसा ही आप इवनिंग में जो है रिपीट कर लीजिए। सो आई होप दिस आंसर्स। so I assume that regular pack means the paste version basically. Yes. हाँ, तो वो नहीं देना है, वो प्री डायबिटिक Correct. रेंज तक तो फिर भी दे सकते हैं, पर अगर Absolutely. फुल डायबिटीज रेंज है तो उसमें फिर शुगर फ्री वाला ही देना है, नॉट द रेगुलर वन। Correct. So good to know that I think lots of questions are coming. So still we are Yes, sir. waiting for Here one is or no two more any minutes. other question right now. Yeah, we are waiting for one or two more minutes. If some questions come. Okay. So, anyways, I will Auntie continue with is the. saying thank you for the wonderful session. So lots of doctors are appreciating the session. Thank you, thank you. सो इसको जैसे ब्रेन फंक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली जीरियाटिक जो पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोगों का जो पॉपुलेशन है, उनमें भी काफी यूजफुल है टू हेल्प प्रिवेंट द अल्जाइमर्स, या फिर देखने, क्योंकि सेंसेस भी वीक हो जाते हैं उसमें, तो अमृत कलश रेगुलर लेने से रसायन इफेक्ट उसका बहुत अच्छा उसमें देखा जाता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन गिव। इवन कई लोगों को जिनको सब्सटेंस डिपेंडेंस हो जाती है, सब्सटेंस अब्यूज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैरिजुआना का है या कोई और ड्रग्स वगैरह है, तो उसमें भी ये देखा गया है कि अमृत कलश जो है वो हेल्प करता है, और उसकी जो डिपेंडेंस है ऑन एनी लाइक टी, कैफीन, और इवन दोज प्रोडक्ट्स लाइक मैरिजुआना एंड ऑल, तो उसमें भी डिपेंडेंस कम होता है, ऐसा देखा गया है। सो मैक कोरोनरी डिजीज में कैसे काम करता है, इज नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक जी भी, आई थिंक वी शुड टेक दिस Yes, आंसर yes. क्वेश्चन। सो कोरोनरी डिजीज में क्या होगा कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है, बैड केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसके बाद क्या है, आर्टरीज में प्लाक जमा शुरू हो जाता है। सो अमृत कलश में ये देखा गया है कि जब इसको दिया जाता है तो ये जो प्लाक है, इसकी सेडिमेंट्स जो हैं वो वहां एक्यूमुलेट नहीं होने देता, उसको बाहर निकाल देता है। सो अगर कोरोनरी यानी कि आर्टरीज में कहीं पे भी अगर ब्लॉकेजेस नहीं है, तो फ्लो अच्छा रहेगा प्राण का, ब्लड का, या रस का, जिसका भी आप कहना चाहें, तो आगे फिर कोई डिजीज का उसमें दिक्कत नहीं होती। बट इट हेल्प्स प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। बेसिकली जो प्लेटलेट अंदर टूट के कोलेस्ट्रॉल, प्लाक या व्हाटएवर मिक्सचर बन के जो रोकता है उसकी डायमीटर को, वो नहीं होता है। I hope this answers. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. So I think the questions are over now. And okay, one more question. What type of sugar use in regular pack? So it's a normal sugar which is used in making the regular pack. Regular crystal sugar is used. Okay, fine, sir. I think thank you very much once again Thank for you. Thank conducting you. all the session and taking all the queries. So thank you once again to all the viewers who has joined us today. Thank you. I think now we Thank can you, sir. conclude. Thank you. Thank you. Thanks a lot.